हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भाइयों। जय श्री राम भाइयों, कैसे हो आप सब। और वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक थ्रू किंग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एलन वेक का 7th एपिसोड भाइयों। हाँ भाइयों, नंबरों में थोड़ी गलती हो गई, क्या है ना, थोड़ा आगे पीछे हो गया, पर कोई नहीं भाइयों। आप देख रहे हैं 7th एपिसोड। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करके पिछला एपिसोड देखो। और मैं थोड़ा बता देता हूँ स्टोरी के बारे में, जो जितना भी पीछे थोड़ा बहुत हुआ है, जितना भी हमारे साथ हुआ है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम यहाँ से अगर अब आगे बढ़े तो ठीक है भाइयों। तो भाइयों देखो, स्टार्टिंग से थोड़ा बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जब हम आते हैं, हम एक सपने में होते हैं, और उस सपने में हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी बीच में एक आदमी आ जाता है जो हमारी गाड़ी से टकरा जाता है, और फिर जैसे ही वो टकराता है, हम बाहर निकल के उसे देखते हैं, पर पीछे से कुछ आवाज़ आती है। जैसे हम आगे पीछे मुड़ते हैं, फिर हम आगे वापस मुड़ते हैं, तो देखते हैं वो बंदा गायब हो गया। फिर हम पैदल जाते हैं आगे तक, और देखते हैं फिर वही बंदा पीछे हमारी गाड़ी के पास खड़ा है कुल्हाड़ी लेके। और फिर हम उससे डर के भागते हैं, और वो टेलीपोर्ट होके वापस वहीं आ जाता है हमारे पास। ऐसे करते करते हम भागते हैं। फिर हमें ऐसे भागते रहते हैं, तो हम एक घर में चले जाते हैं, और वहाँ पे एक और कोई पुलिस वाला होता है जिसे वो मार देता है, और हम बच जाते हैं। लेकिन फिर हम वहाँ से भागते रहते हैं, तो एक तेज़ रोशनी हमें दिखाई देती है, और वो उसमें से वो पता नहीं कौन है, वो कहते हैं कि हमें कि ये लोग रोशनी से डरते हैं, ये एक तरीके की इन पे बुरी शैडो है, तो ये उनसे डरते हैं। अगर तुम इन्हें ऐसे रोशनी दिखाओ और फिर मारो तो ये मर जाएंगे। तो हम वही करते हैं ना, मारते हैं। फिर एकदम से हमारी बीवी हमें उठा देती है, और हम अपनी बीवी के साथ वेकेशन बनाने आए होते हैं यहाँ पे। और जब हम आ रहे होते हैं, तब हमारा एक दोस्त है बैरी, और उसने यहाँ पे सारा इंतज़ाम कर दिया था। पर हमें अपने होटल की की लेनी थी, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे एक स्टकी नाम का बंदा था जिससे हमें होटल की की लेनी थी। तो जब हम अंदर गए, हमारे पोस्टर वोस्टर वहाँ लग रहे थे, और जो वहाँ की वेट्रेस थी वो हमारी बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो उसने हमसे थोड़ी बहुत बातें की, और उसने बोला कि स्टकी वॉशरूम में है। तो जैसे हम वॉशरूम की तरफ गए, तो वहाँ पे हमें एक आंटी मिली जिसने कहा कि स्टकी की तबीयत ख़राब है, और उसने हमें वो चाबी दे दी, और हम चाबी लेके वहाँ से चले गए। जैसे हम वहाँ से गाड़ी लेके निकले, पीछे से स्टकी हाथ उठाते हुए हाथ उठाते हुए आया, और कहा कि आपकी चाबी मेरे पास है, आप कहाँ जा रहे हो। पर हाँ, तब तक हम जा चुके थे, ये दिखाया। उसके बाद हम एक तालाब या एक कुछ भी कह लो, उसके हम बीचों बीच, वहाँ पे एक घर था जो वोल्केनो इरप्शन में वो जो लैंड बना था, वहाँ पे एक घर था। हम वहाँ गए, और फिर उसके बाद हम वहाँ रहने लग। थोड़ा सा हमने वहाँ देखा वहाँ पे फिर हम जैसे ही अंदर आए, तो हमारी बीवी ने हमें बुलाया कि इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं, देखते हैं हम टेबल पे टाइपराइटर पड़ा है, और हम उसे देखते हैं। और फिर हमारी बीवी बोलती है कि मैं ये टाइपराइटर लाई हूँ, और ताकि तुम यहाँ कुछ लिख सको। और मैं यहाँ पे, मेरा मकसद यहाँ पे आने का एक और है कि मैं यहाँ पे एक डॉक्टर से मैंने बात की है, जो तुम्हें देखेगा, और जो भी तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं, तुम उससे फ्री हो जाओगे। ये बात सुन के हमें बहुत गुस्सा आता है, और हम उसे छोड़ के घर से बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर घूमने, क्योंकि वो अंधेरे से डरती है, इसलिए वो बाहर नहीं आएगी। और जैसे हम बाहर जाते हैं, अंदर से हमारी बीवी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम भाग के आते हैं, तो देखते हैं कि बीवी वहाँ से गायब है, और वो तालाब में वो डूब रही है। कोई उसे पानी के अंदर लेके जा रहा है खींच के, और हम उसे बचाने के लिए पानी में कूदते हैं, लेकिन पानी में कोई नहीं होता। फिर हमारी आँख खुलती है एक एक्सीडेंट में, कार के एक एक्सीडेंट में, जिसमें 1 हफ्ता गुजर गया। और उसके बाद हमारी बीवी का कुछ पता नहीं है। हम जाते हैं, ढूंढते हैं बहुत, पर हमें कुछ मिलता नहीं। फिर हमें बीच में एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है, जो हमने लिखी नहीं है, पर हाँ, हमारा प्लान था उसे लिखने का। इसका प्लान था, एलन वेक का प्लान था उसको लिखने का, पर उसने लिखी नहीं थी। पर वो मैन्यूस्क्रिप्ट पहली से वहाँ पे रखी हुई थी, और जो उसमें चीज़ें लिखी हुई थी कि ये वो सारी हमारे साथ चीज़ें हो रही है। मतलब ये जो बंदे हैं जिनके साथ ये बुरी सी काली सी परछाई है, शैडो है, ये सब हमने उस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिख रखा है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और ये सब हमारे साथ हो रहा है।
उसके बाद हमें पुलिस वाले मिलते हैं। हम पुलिस वाले से बोलते हैं कि हमारी बीवी को कोई किसी ने किडनैप कर लिया है। तो हम उस जगह पे जाते हैं जिधर वो जहाँ हम रह रहे थे। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले बताते हैं कि वहाँ कोई घर नहीं है, और जब हम खुद देखते हैं अपनी आंखों से कि वहाँ पे कोई भी घर नहीं है तो हम बहुत शौक हो जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पे पहले एक घर था बहुत टाइम पहले, पर वोल्केनो इरप्शन की वजह से वो घर टूट गया, तो यहाँ कोई घर नहीं है। उसके बाद फिर वो हमें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, और जैसे ही हमें हमारा फ़ोन वापस मिलता है, वैसे ही हमें कॉल आता है किडनैपर का, और वो कहता है कि अगर तुम्हें वो अपनी बीवी चाहिए तो मुझसे लवर पीक्स पे आके मिलो। तो हम जैसे ही वहाँ जाते हैं, लवर पीक पे जाते हैं, और लवर पीक पे जाने के बाद हमें वो बंदा मिलता है, और वो बंदा हमसे डिमांड करता है कि हमें उसे पूरी की पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट चाहिए। और हम कहते हैं हम कहाँ से लाएंगे मैन्यूस्क्रिप्ट? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हें कहीं से भी लानी होगी, मुझे पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ूंगा। वो ऐसे हमें धमकियाँ देता है। फिर हम कुछ करते हैं कि हम ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत, हम फिर सीधा हम उसे पकड़ने लगते हैं, पर हम पे कोई प्लान नहीं होता। ऊपर से हम जंगल में होते तो हम वापस घर चले जाते हैं। बैरी हमारा वेट कर रहा होता है, और वो बताता है कि घर के बाहर बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं, तो वो भी डर जाता है। तो हम जैसे घर जाते हैं, उसके बाद हमें वही वेट्रेस जो उस फर्स्ट वाले वो रेस्टोरेंट में थी, वही वेट्रेस का कॉल आता है, और वो कहती है कि उसके पास मैन्यूस्क्रिप्ट है, उससे आके ले लो। तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और हम सुबह जब उसके पास जाते हैं तो जैसे हम उसके घर में जाते हैं तो वो हमें कुछ पिला के हमें बेहोश कर देती है। और वो जो कर रही होती है वो नहीं करा रही होती है। वो जो हम जब अंदर जाते हैं, वो जो आंटी होती है जिन्होंने हमें की दी थी, वही आंटी उसके ऊपर हावी हो गई थी, और वो करवा रही थी ये सब। उसके बाद हम वहाँ से भाग जाते हैं। बैरी होश में नहीं होता, तो इसलिए हम वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जैसे हम जा रहे होते हैं, पुलिस आ जाती है, और फिर हमें पकड़ने लगती है। हम पे मर्डर का चार्ज लगाने लगती है, हमें पकड़ने लगती है। फिर हम वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो हम अपनी बीवी को नहीं ढूंढ पाएंगे। और फिर वो हमें कहता है कि हमें मिलो माउंटेन रूइंस पे, मतलब माउंटेन रूइन नहीं, हमें कोलोराडो पीक पे मिलो, वहाँ बोलता हमें। तो हम वहाँ जाते हैं। अब हम वहीं जा रहे हैं भाइयों। अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होगा। तो जिसको स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही थी, मैंने आपको बता दिया भाइयों। ठीक है भाइयों, तो अगर आपको पूरा समझ आ गया हो तो स्टार्ट करते हैं भाइयों फिर। ठीक है, चलो। तो हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी हम मिरर पीक लुकआउट। I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. यहाँ से जा सकते हैं? ओबे भाई, मैं भी गिरता गंदा। Hey, I'm here. I'm coming. अबे कौन है? Please lady, the boat didn't know who is the missing with. अरे कौन है लेडी भाई वो? अबे तो वही है ना पुलिस वाला जिसने हमें वो किया था, वो पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट लाने के लिए। अबे ये वही आंटी है यार। उसने बोला, उसने जब वो डरा हुआ था, वो उसे डरा रही थी वो मैडम, तो भाई उसने बोला कि उसके पास हमारी वाइफ नहीं है, वो हमारा उल्लू बना रहा था। अबे
एंड ऑफ एपिसोड 3 भाइयों, एपिसोड 3 का एंड हो चुका है। Previously on Alan Wake. देख लो एक बार प्रीवियसली क्या हुआ था, सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. भाइयों, उस पर हमारी वाइफ नहीं है। Baby, it was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. हम यहाँ आए I felt कैसे like भाई, this ये was तो बताओ। happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. अच्छा, हमें कैद किया गया है, तो हम क्या करें? कुछ तो कर नहीं सकते यार यहाँ। अरे खुल Good गया। evening, Alan. Are we अरे feeling डॉक्टर जी। better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. चलो भाई फिर। फॉलो डॉक्टर This corridor is हार्टमैन। for patients. Most of them aren't here सब right locked है। now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are सब particularly लॉक नहीं है involved, भैया, of सब course. लॉक नहीं है। ये क्या है? कुछ भी बनाते हैं भाई लोग आजकल। नाइट स्प्रिंग्स द वीडियो गेम। I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize यार in ग्राफिक्स देख रहे हो artists. भाइयों, प्राय प्यार हो I जाता है bet you ग्राफिक्स do. से। Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing Dissolve. under control if we Dissolve. work together. This way, Alan. हम तो पूरी जगह देखेंगे। पूरा भालू। अरे भैया भालू जंगल में जा भाई, यहाँ के मचारिया भाई। चलो भाई। Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid अबे चल बे, delusions, unusual thinking, चल an बे चल, obsession about अबे light चल। and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. अरे भाई जो हो रहा है सो हो रहा I है। wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words.
It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. क्या Unless ब्यूटीफुल we नज़ारा है fight यार. the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. तो डॉक्टर हमें बोल रहा है कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, तुम्हें ये बिलीव करना होगा, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो तुम पागल हो जाओगे और तुम ये बिलीव नहीं कर रहे हो. तुम अपनी एक मनगढ़ंत कहानी है ये तुम्हारी कि मतलब तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे तुम्हें सुपर नेचुरल चीज़ें तुम्हें मार रही हैं और तुम लाइट वाइट से बच सकते हो ऐसा, और तुम्हारी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया, ये हो गया वो हो गया. तो ये सब कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो पानी में डूब के मर गई. तुम्हें ट्रुथ फेस करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी हालत बुरी होती जाएगी. और हमें पड़ता है घंटा फर्क, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है. बियॉन्ड द शैडो यू सेटल फॉर देयर अ मिरेकल illuminated in the memory of dear friend and जी डॉक्टर जी, चलिए चलिए. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't सच it? में भाई. Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. अबे भाई Well, बादल देख रहे हो. This way. Follow me. बस ये दिखाने आया था तू बुड्ढे. Alan, what I'm telling you is good news. Right now, Bol, bol. we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed madly for inside yourself. my head. But I I dug my can't do nails it into by the palms of my myself. hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. करना ही नहीं हमें एक्सेप्ट. Come along. Let's हम go अपनी inside. वाइफ को ढूंढना है, वाइफ को ढूंढ के जाएंगे. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary. कौन है ये बोलने वाला? अच्छा ये है. Emerson, अबे भाई क्या हो गया? I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't. अरे यार बाहर का नज़ारा देखने दो यार. Decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay. Sorry. Boo. हेलो मैडम. La 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 Elbow strike. la la Ooh, yeah. la 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 la. Get him. Now, To the head. you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. That's enough मैडम. मैं बहुत डर गया हूँ. Oh my God. और कोई है क्या यहाँ पे?
ब्रो दिस इज स्कैरी। देखियो अपने आप से लड़ रहा है क्या? पेंटर Oh, hello. I've painted you. मेरी बना रहा है क्या? I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. भाई Well, क्या I नजारा guess है I'd यार। better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. फॉलो डॉक्टर। अरे उसी को फॉलो करना है यार। कहाँ है वो? चाचा हमारा डॉक्टर कहाँ है? अबे वो खेल रहा है खिलौने से भाई। यहाँ सब पागल है क्या? पागल भर्ती हैं यहाँ सारे। आप समझूं ये भी पागल है क्या? उसने कहा था ना ऊपर आने को। भाई भालू मार के रख रखे हैं और भाई ये इलाज कर रहा है, देख लो। इसको खुद को इलाज की जरूरत है भाई। भालू को मार के यहाँ बिछा दिया। भाई अरे टीवी ऑन होएगा क्या? Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. अरे चाचा है किधर? हैं? My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two Bhai. are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had मैं ये लग भी रहा है उड़न। a heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We
wrote it all down lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up. Or Thomas Zane writing assistant. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Jen could feel the poem taking from shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the key of the typewriter. According to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Yeah, good thing he's not overreacting or anything. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. Something's The storm's wrong. bound to make you know who I'm not jumped myself. in. You know how they get. It's hard to think. There's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. भाई ये वो जो स्टोरी लिख रहा है ना, वो सच में वो स्टोरी लिटरली तबाह कर रही है ऐसे ही. Why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a... The white ये लिखने glare वाला on the है. blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? क्या हो गया भाई बाहर? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. हाँ रात को ही तो जाएगा तू. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast, aren't they? Nah. It's my storm. I'm taking it. Sinclair looked bad. That wasn't a love Backstage is tap. all The yours. crazy old He मिल गई hard वे. hard. Seize your And if she was one of destiny. Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript Come pages. out and face That's the where he'd be music, keeping them. Birch. It's time to pay the piper. अरे हट तो. Maybe you could come out and beat our wrinkled, adult, diapered asses for it, since you're so tough, Bert. खोल खोल भाई जल्दी खोल. देखना है भाई हमारे पेजेस में. You think we haven't seen bugs like you before? The markings on the Oh, tape said bhai. they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really
Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes, and I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Let me out of here! Hartman, do you hear me? Save Barry. I'm gonna sue your crazy quack ass to Barry? Ow! About time! Seriously! Do you Man, have I'm any glad idea to how see much you. trouble you're in? We need to get to I am Hartman's famous. office. I represent a celebrity. कौन है भाई? वो मिल गई मैन्युस्क्रिप्ट, गन भी रखी These है. were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! अरे यार बैरी तो हमारा दोस्त है ना कि इसका यार. Mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful with your ability and mine. Your ability and mine. भाई ये कुछ बड़ा करना चाहता है हमारे साथ. बाहर में जाए यहाँ से भाई. डार्कनेस के अंदर रह. भाई डार्कनेस. गया भाई ये मरा. भाई वो तो मर गया. यहाँ पे अटैक हो गया. डार्कनेस अटैक हो. भगो 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 भगो. अबे खोल ना. I have to find out. खोल इसे. अरे नहीं यार, चीजें उड़ेंगी गिरेंगी टाट पे. अरे यार जल्दी 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 जल्दी. डार्कनेस ले जाएगी हमें. Get the possessed bookshelves out of my way. अरे यार ये लगेंगी. आओ. ओके मैं समझ गया. समझ गया. पर यार मैं लेट हो गया शायद. बहुत बढ़िया.
भाग 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 भाग। क्या है यार ये? होगा कैसे? ना ना, इससे क्या होगा? ये क्या करना है यार? अरे ये गेट बंद हो चुका है, मतलब रास्ता तो एक ही है। यस भाई हमें जाने दो यार। नहीं ये गेट खुल नहीं रहा है। ओ क्या है ऐसा यहाँ पे? ओके इसे तुड़वाना था इससे। बैरी बैरी में आ गया। But the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. अरे Barry, यार I don't have a light. Take this, Al. अरे यार ये ना मर जाए कहीं फिर। Oh God! Look at the house, Al. Look out!
अरे यार Oh, jeez, Al! The house looks bad! Let's get out of here! मैं आ रहा हूँ यार बैरी। तू तो भाई सीधा सीधा चला गया, हमें जाने ही ना दे रहे सीधा सीधा। बैरी भाई सुनते नहीं। बैरी भाई को लगता है हम किडिंग कर रहे हैं, पर हम किडिंग नहीं कर रहे हैं बैरी भाई। बंदे आएंगे। डोंट ट्रस्ट एमिल एमिल, पता नहीं क्या लिखा है। बाद में करेंगे भाई अभी इसको। किडिंग मत करो मेरे साथ, मैं किडिंग वाला बंदा नहीं। ए भाई अब इससे अच्छा गोलियां दे दो यार। यार और है, पर गोलियां तो सिर्फ दो ही हैं। गोली मिली। भाई डॉक्टर ही निपटा दिया भाई हमने तो। अरे तो वो है ना गार्ड जो भी था।
अरे गोली आउट ऑफ एमो ब्रो। काबूम भाई, टट्टी निकाल दी थी यार। काम यहाँ में हाई खाएगा। सांस फूल गई भाई बग बग के। ओ ये लाओ, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। वेरी वेरी नाइस। अरे गलती से यूज कर दिया यार मैंने। बैटरी बड़ी कीमती है यार। प्लेयर मिली। हो हाँ। भाई बहुत आने वाले हैं। Prepare for the fight bro, prepare for the fight bro। आज सबको भूत बना देना है। अरे रुक चाचा। That the spirit of demon king। अरे भाई कितना दूर है भाई, बस उतरो का उसको उधर पार करना था, बैरी के पास जाना था भाई, वहां तक नहीं जा पाए हम। बोरा बैरी भाई बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत ही तगड़ी होने वाली है। बहुत ज़्यादा आएंगे या तो बॉस आ जाएंगे, क्योंकि ना 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 ना
दिस इज टू स्कैरी। जैसी गेट पे जाऊंगा वैसे ही होगा कुछ। वो रहा बैरी। और इतनी गन फ्लेयर मिलने का मतलब यही है कि वी हैव टू फेस द बॉस। लॉक है। Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. कवर देना पड़ेगा इसे थोड़ा। Shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so I'll find it. Don't worry about it. वो ढूंढेगा और लो, कहा था मैंने। उसके साथ वो भी आ गए पंची। और भाई ये लोग देख लो कितने हैं। एक Hurry up, Barry. I'm on it. I'm on it. It's gotta be here. Just hang on out. Around the corner. ओ बच गया यार, बच गया भाई मैं। Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. भाई दोस्त तो बढ़िया अपना बैरी यार। भाई बच गए यार। I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Hey, y'all. Al! God damn it, Al, talk to me! I had lost So- my gun in the crash. चलो। Barry was nowhere to be seen. तो भाइयों हमारा हो गया है एक्सीडेंट और हमें ढूंढना है बैरी को, और हम ढूंढेंगे बैरी को अगले एपिसोड में भाइयों। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद भाइयों।